Hello friends, today we are studying the chapter of circle. First we have to discuss on the base of circle. सर्कल के ऊपर जो भी बेस रहता है वो बेस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिस क्या होते हैं? सबसे पहले सर्कल, वी हैव टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ओके, क्या होता है डेफिनेशन ऑफ द सर्कल? डेफिनेशन ऑफ द सर्कल ये होता है कि when you are collecting the points, means suppose these are the points, when you are collecting all the bunches of the point, these are the bunches of the point. Okay, when you are taking the bunches of a point from a fixed point, suppose this is a fixed point. Okay, this is a fixed point. When you are taking the bunches of a point in such a way that its distances of these bunches of a point from this fixed point is always constant. We have to take a bunches of point. All these are the bunches of point. Okay, when you are taking the bunches of a point, what you have to see? You will get this is a straight line, but the distance between this fixed point, the distance between these bunches of point from this fixed point, we want to maintain constant, but here we are not getting the constant fixed distance. All these are different distances. Okay, in such a way that due to this we are getting the straight line, not a circle. So what we have to do to want a circle? Circle मिलने के लिए हम क्या करेंगे? We are taking the bunches of point in such a way that its distances from the fixed point always constant. तो constant लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? Suppose this distance is 5 centimeter, so you have to take all the bunches of point in such a way that the distance of this point from fixed point always fixed. Suppose this is 5 centimeter. You have to take these bunches of point in such a way that the distance from this fixed point from this bunches of point always constant. Suppose this is a fixed circle. So you have to do in such a way, you have to take these bunches of point in such a way that the distance of this fixed point is always constant. इस तरह से यदि आप bunches of point लोगे, this is a group of points, bunches of point, उसको इस तरह से आपको arrange करना है that bunches of point, the distance from these bunches of point from a particular fixed point which is not movable. This is a constant fixed point. You have to take these bunches of point, the distance of these bunches of point from this fixed point always constant. कोई भी आप point ले लो, this bunches of point, और ये वाला point जो भी ये curve पे रहेगा और fixed point से जो भी distance रहेगा वो always आपको constant रहना चाहिए. इस तरह से आपको ये circle मिलेगा. This is the definition of a circle. What is the definition of a circle? The definition of circle is that the bunches of point you have to arrange, these all are the bunches of point, you have to arrange these bunches of point in such a way that the distance of these bunches of point from this fixed point always constant, always constant, always constant. इस तरह से जो फिगर मिलेंगे आपको, इस फिगर को कहते हैं सर्कल. Understood? Now we are discussing on the base of the circle chapter number 10, circle, 10th class CBSE. Okay, now you know what is the circle. Okay, next suppose we have to draw one line, this is the one line, and we have to draw a one circle. Okay, this is a circle having a center O. Now we have to take a relation between the line and circle. हम लाइन और सर्कल ये दोनों के बीच का क्या रिलेशन और क्या पोजीशन रह सकती है? दिस इज द फर्स्ट पोजीशन. जब लाइन इस तरह से रहेगी और सर्कल हैविंग अ सेंटर O इस तरह से रहेगा. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस? द पोजीशन ऑफ इट इज सेड दैट द लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल. ये पोजीशन में हम कहेंगे कि ये लाइन ये सर्कल को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. तो इस तरह की जो लाइन रहेंगी, इस तरह की लाइन
और सर्कल में जो पोजीशन रहेगी, ये पोजीशन को हम बोलेंगे दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल. So we have to call this line as a non-intersecting line, क्योंकि वो लाइन, ये सर्कल को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट इस तरह से नहीं कर रही है. So we have to call this line as a non-intersecting line of this circle. Now what is the second position of line and circle? लाइन और सर्कल की सेकंड पोजीशन क्या देखेंगे? लाइन और सर्कल की सेकंड पोजीशन यह है. Suppose we have to draw a line and it passes through circle. जब कोई लाइन ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो इस लाइन को क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे. क्या कहेंगे? This line is called the secant. This line is called the secant. The line which is intersecting. The line which is intersecting is called secant of a line. What we have say? This is a secant of line. ये line को secant of this circle कहेंगे. क्यों? Why? Because this line intersecting the circle. Okay? This is the second position of a line and circle. Now we have to take a third position. What is the third position? The third position is that when a line, suppose this is your circle, okay. Suppose this is a circle having a center O. So what is the third position of line and circle? When line touches the circle at only one point at P. जब लाइन कोई भी सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है तब उस लाइन को उस सर्कल का टेंजेंट कहते हैं. The third position of the relation between line and circle is that when line touching only one point of a circle, that line is known as tangent of a circle. This is the third position. इस तरह से पहले देखा है, पहले फिगर में सर्कल और लाइन बिल्कुल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे. थर्ड पोजीशन में लाइन सर्कल को पूरा इंटरसेक्ट कर रही है तो वी हैव टू कॉल सेकंड ऑफ दैट सर्कल. सर्कल का सेकंड कहेंगे. और थर्ड पोजीशन ये रहती है कि दैट लाइन टचेस ओनली वन पॉइंट और दैट लाइन पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ सर्कल, वो लाइन को टेंजेंट कहेंगे. तो हम इस टेंजेंट के बारे में फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं. What is the tangent? Tangent is a line which is passing through only one point. तो इसका मतलब होता है यदि कोई लाइन, कोई भी पॉइंट यदि सर्कल पर है तो उस ओनली सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर पॉइंट P है सर्कल का, ये सर्कल का एक पॉइंट P है तो ये ओनली वन पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट ही हम ड्रॉ कर सकते हैं. यदि यहाँ पे दूसरा पॉइंट है तो यहाँ से दूसरा टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे. अंडरस्टूड? यहाँ तीसरा है, हम तीसरा यहाँ पे टेंजेंट निकालेंगे. तो टेंजेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट? टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम ओनली वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल. दिस पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट इज ड्रॉन. This is a P point, okay? And from this point this tangent is drawn. This is a P point. The point of a circle from which the line is drawn, this is only one point. This point is called point of contact of a tangent and circle. इसे कहते हैं point of contact. सर्कल की एक ही पॉइंट से जब कोई लाइन ड्रॉ होती है, that point is called point of contact of that tangent with a circle. Understood? Now next, what is the next point? Next point क्या देखना है हमें? Next point ये देखना है कि suppose this is our circle, okay? Now suppose this is one point inside the circle having center O. Can we draw tangent from the inside the point? सर्कल के अंदर यदि एक पॉइंट है तो उस पॉइंट में से हम टेंजेंट निकाल सकते हैं क्या? लेट्स वी हैव टू ट्राई. सपोज दिस इज अ इनसाइड सर्कल, वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन
another we have to draw second line. We cannot draw tangent inside the circle, है ना. सर्कल के अंदर के पॉइंट में से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. सपोज व्हाट्स वी हैव टू सपोज we have to draw a circle. Again, next position, we have to draw a circle. Suppose this is our circle. When there is one point on the circle, यदि कोई सर्कल पर एक पॉइंट है तो उस एक पॉइंट से हम कितना टेंजेंट निकाल सकते हैं? We have to draw only one tangent. सर्कल के अंदर यदि कोई पॉइंट है तो सर्कल के अंदर के पॉइंट से we can't draw a single, not a single टेंजेंट. कोई एक सिंगल भी टेंजेंट कुछ भी निकाल नहीं सकते हम. तो टेंजेंट यदि सर्कल के अंदर पॉइंट रहा तो हम कुछ भी टेंजेंट नहीं निकाल सकते हैं. लेकिन टेंजेंट के ऊपर यदि एक पॉइंट है तो उस सिंगल पॉइंट में से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं. दिस इज सेकंड पोजीशन. हाँ, नाउ इफ there is a point outside the circle, suppose this is a point, suppose it is known as T. यदि टेंजेंट के बाहर T पॉइंट है तो ये T पॉइंट से हम कितने सर्कल टेंजेंट निकाल सकते हैं? T पॉइंट से ये सर्कल पर हैविंग अ सेंटर O, आउटसाइड है T में, आउटसाइड पॉइंट है ये T. फ्रॉम दिस आउटसाइड पॉइंट we can draw how many tangents on this circle? From this outside we can draw this one tangent that is touching to one point, suppose P, and we can draw two tangent, suppose this is point Q. So it says that when there is a outer point, from this outer point of the circle we can draw maximum two tangent on this circle. जब भी कोई सर्कल के बाहर एक आउटसाइड पॉइंट रहता है तो उस आउटसाइड पॉइंट से हम मैक्सिमम दो टेंजेंट उस सर्कल पर निकाल सकते हैं. तो व्हाट इज आवर कंक्लूजन? आवर कंक्लूजन इज व्हेन देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, फ्रॉम दिस इनसाइड पॉइंट वी कैन ड्रॉ एनी सिंगल टेंजेंट. हम अंदर यदि कोई पॉइंट रहा सर्कल के तो सर्कल के अंदर के पॉइंट में से हम कुछ भी टेंजेंट निकाल नहीं सकते. सेकेंड पोजीशन इज यदि सर्कल पर एक ही पॉइंट है, इफ देयर इज ओनली वन सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल, यदि सर्कल का एक सिंगल पॉइंट हम लेते हैं तो फ्रॉम ऑन दैट सिंगल पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये सिंगल पॉइंट में से हम ओनली वन सिंगल टेंजेंट ही निकाल सकते हैं. दिस इज द सेकंड पोजीशन. Understood? And for what is the third position? Third position when the point is outside the circle. जब सर्कल के बाहर कोई आउटसाइड में पॉइंट रहेगा तो फ्रॉम दिस आउटसाइड पॉइंट वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम वन टेंजेंट एंड टू टेंजेंट. हम मैक्सिमम दो ही टेंजेंट आउटसाइड पॉइंट से सर्कल के ऊपर निकाल सकते हैं. अंडरस्टूड? ये हो गया बेसिक नॉलेज ऑफ द सर्कल. टेंजेंट, circle, circle, tangent. Now let's come to the next point. जब तक आप ये बेसिक नहीं समझ में आएगा आपके आगे के क्वेश्चन समझने में आपको बहुत आसानी जाएगी पूरा बेसिक समझने के बाद. So what is the next basic of this circle? Now let's come to the point. Suppose this is our circle, okay, having a center O. Can we draw intersecting line? It's called a secant. This is 1 second, okay, this is PQ. Now can I draw again parallel to this line, again second? Can you draw parallel to this, and all are intersecting to circle? Understood? Again you have to draw parallel lines, again you have to draw one parallel line which is touching to only single point on this circle. Understood? I want to draw a line which is passing through the single point. This is single point. Here is the single point. We have to give the name of Q. Sorry, Q no. We have to give the point A. This is also a line passing through the single point of a circle. All these are the secant which is parallel to each other. Again I want to draw left side parallel line, parallel line. Again I have to draw one parallel line.
This is circle. I want to draw a one parallel line touches to the only single point of this B. From this conclusion, what we have to see that we have to draw maximum two parallel tangent to the circle. जब आप सर्कल को कुछ इस तरह से इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस निकालते हो तो व्हाट यू हैव टू सी दैट जब पैरेलल इस तरह के आप सेकेंड निकालते हो तो इसमें आपको दो ही ऐसे टेंजेंट मिलेंगे सर्कल में जो एक दूसरे से पैरेलल रहता है. तो what is the conclusion? We can draw only maximum two parallel tangent to each other. Okay. Now what is the next point? Comes to the next point. All these are the base of the circle. Before starting solving the exercise of depend on the circle chapter. Now, where is the second? But tangent is the second when both of the endpoints of the corresponding chord coincide. When you have to draw a tangent, this is your tangent and this is second, this is intersecting line, this is second having a center 0 of the circle. Second, what is this? This is the point of intersecting of the circle. This BC is called the chord. What is the chord definition? You know the definition of a chord? Chord, what is the chord? Chord is when you are joining any 2 points on the circle. When you are joining any 2 points on the circle, this is chord. This is also a chord. This is also a chord. This is also a chord. And this is also a chord. Okay? What is the chord? Chord is any 2 points on the circle. The segment which is joining any 2 points on the circle is called chord. This is chord. Okay? You are drawing the intersecting line. This is the second. You are drawing this second. You are drawing this second. Having this TS is a chord. इस तरह से आप एकदम extreme end तक जाओगे तो you will get a position when this chord goes on decreasing and at least you will get this two end point of this chord. This gradually goes on decreasing at instant these two end points of chords coincide with only one point. मतलब जैसे जैसे आप इंटरसेक्टिंग सेकेंड को लेफ्ट साइड ग्रेजुअली डिक्रीज करोगे शिफ्ट करोगे तो ये कॉर्ड की जो लेंथ है धीरे धीरे छोटी छोटी होंगी और एक पोजीशन ऐसी आएगी सर्कल पर कि ये दो एंड पॉइंट है कॉर्ड के वो कोइंसाइड एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड हो जाएंगे. तो इस तरह से टैंजेंट मतलब व्हाट इज दिस? अ टैंजेंट इज द सेकेंड व्हेन बोथ द एंड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड कोइंसाइड विथ ओनली सिंगल पॉइंट. ओके. The common point of tangent and the circle. This is a common point. This is suppose this is circle and this is a tangent. The common point of this circle and tangent. Why? Because tangent touches only one point of a circle. Circle का भी एक point वही common रहेगा जो tangent का point रहेगा. So this is a common point of tangent. This is called point of contact. Understood? Now comes to the theorem. What is theorem? Theorem 10.1. Do you know? Theorem? आपको पता है theorem मतलब क्या होता है? Theorem means this is a natural ऐसी एक properties रहती है कि natural तरीके से you have to draw a figure, it will remains true. जब आप example solve करते हो तब वहाँ पर आपको theorem का use करना रहता है. This is a theorem 10.1. ओके. एक बार थ्योरम आपने प्रूव कर दिया है तो यही वाली प्रॉपर्टीज आपको फिर से वही सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी. सिर्फ आपको ये बताना है बाय थ्योरम 10.1 इट इज ट्रू. ओके. नाउ कम्स टू द पॉइंट. व्हाट इज द पॉइंट? What is theorem? The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्या होता है स्टूडेंट का कि वो क्वेश्चन या थ्योरम ठीक तरह से पढ़ते नहीं है. थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये बिल्कुल उनको पता नहीं रहता है. अंडरस्टूड? तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो या कोई भी थ्योरम हो उसको अच्छी तरह से हम पढ़ लेना चाहिए. उसमें क्या दिया है पॉइंट्स और हमको क्या करना है. यदि क्वेश्चन है क्योंकि 50% यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% आपका आंसर वहाँ पर सॉल्व हो जाता है. 50% आंसर क्वेश्चन में भी छुपा हुआ रहता है. तो नाउ कम्स टू द पॉइंट ऑन थ्योरम. व्हाट इज द थ्योरम 10.1?
the tangent at any point of a circle. Here is given that tangent at any point of a circle. First we have to draw a circle. This is circle having a center O. The tangent at any point of a circle. This is circle. You can take any point on this circle. Suppose I will take point this P. At this point we have to draw a tangent. Okay. Okay. Here said the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. This tangent is perpendicular to the radius. Okay. This tangent is perpendicular to the radius. Where is radius? This is center. You have to draw from center to this point at the point of contact. The tangent, this is a tangent. You have to give the name of this tangent is x and this is y. This xy tangent at any point, suppose this point any P, the tangent at any point of circle at P is perpendicular to the radius at point of contact. You have to prove. कहने का मतलब है कि कोई भी tangent यदि सर्कल के कोई भी एक पॉइंट पर यदि वो tangent आता है तो वहां पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के साथ ये tangent कभी भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है. We have to prove that this tangent making 90 degree angle with the radius at point of contact. Understood? So कैसे करेंगे हम? सबसे पहले we have to take any point. Suppose we have to take any point at tangent x, y, q other than P. Suppose we have to take point Q on tangent x, y. Now you have to join this center to the Q. Join. Okay. What we have to see? Now हम कहेंगे you have to take a point Q on tangent xy such that OQ is greater than OP. You have to take point Q on the tangent outside the circle. We have to take a point Q on this tangent in such a way that it lies an outside. यदि हमने ये Q point inside the circle लिया होता तो क्या हुआ होता? यदि ये point Q अंदर लिया होता तो ये वाला जो tangent दिख रहा है वो tangent नहीं रहा होता. Suppose this point we have to take inside. तो ये tangent क्या रहा होता? This is a secant. इधर intersecting line हुआ होता. So we always take this Q point outside the circle. Okay. Now, अभी हमने Q outside ले लिया on this tangent. Therefore क्या होगा? OQ is greater than OP. OQ is greater than OP. Okay. अब हमने Q इस तरह से पॉइंट लिया टेंजेंट पे कि वो OQ का जो डिस्टेंस है वो OP से बड़ा रहेगा. आप जितने भी पॉइंट्स लोगे इस टेंजेंट पे वो सभी पॉइंट वो OP से बड़े रहेंगे. सपोज आई विल टेक यहाँ पे S पॉइंट तो व्हाट OS इज ग्रेटर देन OP. कोई भी पॉइंट ले लो टेंजेंट के ऊपर सभी वो OP से बड़े रहेंगे. लेकिन सिर्फ OP ही ऐसा ही रहेगा डिस्टेंस, वो अदर पॉइंट से सब स्मॉल रहेगा. इससे ये कंक्लूजन होता है इससे क्या कंक्लूजन होता है कि OP ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है. कैसे? सपोज यू हैव टू टेक वन पॉइंट, सपोज दिस O एंड यू हैव टू टेक वन लाइन. ओके, दिस एक्सटर्नल पॉइंट. अब ये O से हम ये डिस्टेंस लेंगे कोई भी पॉइंट, ये लाइन के ऊपर के कोई भी पॉइंट लो आप और उसका डिस्टेंस O से देखो, ये बड़ा है, ये फिर छोटा है, ये फिर छोटा है, दिस इज स्मॉलर डिस्टेंस. जैसे जैसे आप यहाँ आओगे यहाँ पॉइंट P पर, सपोज दिस इज पॉइंट P, तो आप जैसे जैसे ये पॉइंट P के पास आओगे तो डिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग और एक ऐसा हमें डिस्टेंस मिलेगा OP जो जितने भी पॉइंट आप इस XY लाइन पे लोगे वो XY लाइन पे जितने भी आप पॉइंट के डिस्टेंस लोगे O से वो सभी ये OP से सब बड़े हैं. OP ही ऐसा एक डिस्टेंस है, वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है. उससे ये प्रूफ होता है कि OP ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है. यही वाली थ्योरी यहाँ पर यूज हुआ है. मतलब कोई भी पॉइंट आप XY टेंजेंट पे लो
Q ले लिया तो वो OQ या PS से OP से बड़ा रहेगा, OS लो वो OP से बड़ा रहेगा, सिर्फ OP ही ऐसा एक डिस्टेंस रहेगा ये लाइन पर जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस रहेगा। इससे ये प्रूफ होता है, व्हाट्स दिस प्रूफ? दिस प्रूफ दैट कि OP is perpendicular to this line tangent XY, understood? तो ये वाला थ्योरम आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल में सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो हर बार आपको ये थ्योरम याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम 10.1, द फर्स्ट थ्योरम इज दैट व्हेन you have to draw a tangent at any point on the circle, then that tangent makes the 90 degree or that tangent perpendicular to the radius at the point of contact. Understood? Let's we have to revise again. This is a circle, okay? When you have to draw a tangent at any point on circle, then this tangent is perpendicular with the radius at the point of contact. This is a theorem. Now comes to the second point. Second point क्या होता है? Now comes to the exercise 10.1. Exercise 10.1. What is the exercise 10.1? This is a fill in the blank. Okay. Now it is a very base. ये 10.1 बहुत ही खास बेस है, इसको अच्छी तरह से आपको करना है, बिल्कुल सोच समझ के। Now exercise 10.1. How many tangents can a circle have? Do you know how many tangents you can draw on a tangent? Suppose this is a circle. How many tangents you can draw on this circle? Suppose I have already said that you can draw single tangent at single point on the circle. Circle के कोई भी एक point से सिर्फ एक ही tangent निकाल सकते हैं. And this circle having a bunch of points means this is a infinite points. If there is a infinite points on this circle means that every point you can draw tangent, 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 every point you can draw tangent. Each and every point. How many points are there on this circle? Circle is a bunch of points means it's having an infinite point. Circle forms with an infinite bunch of points. This means that we can draw infinite tangents on this circle. What is the answer? We can draw infinite tangents, and tangent can be drawn from only one point on this circle. Understood? जिससे ये हम ये प्रूव करते हैं कि हम सर्कल से infinite tangents ड्रॉ कर सकते है। ये छोटी छोटी बातें हैं बेस, जब तक आप बेस को स्ट्रॉन्ग अच्छे से करोगे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते समय बहुत ही इजी जाएगा। नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। दिस एक्सरसाइज 10.2 सेकंड। अ टैंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट? मैंने पहले बताया था दिस इज अ टैंजेंट। जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ भी रहो, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर एंड यू हैव टू गेट अ conclusion. A tangent to a circle intersect it in a point. A tangent to a circle. This is circle and this is your tangent. Okay, it can touch only one point. A tangent to a circle intersect it in only one point. Tangent कभी भी कोई भी circle को एक ही point पर intersect करती है, because tangent can draw only from one point of a circle. What this is the answer of this? Tangent can draw tangent to a circle intersect it only one point. Tangent कभी भी सर्कल के एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। Second, what is the second? Second, fill in the blank. A line intersecting a circle in 2 points